Why I say is कि there are 39 teachers expected. अब देखिए कितने आते हैं. अब आगे से मैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद जब उनसे नाम और पता पूछूंगा ना तो उसी में लिख दूंगा. Please ensure to attend the webinar to get the certificate, to qualify for getting certificate. Yes. If you don't attend, recording मिल जाएगी, certificate नहीं मिलेगा. देखिए वीडियो ऑफ कर दिए तो कैसे चलेगा काम. मैं कैसे मार्क करूंगा प्रेजेंस इनकी. अभी तो 628 हुए हैं. रजनी सिंह, करिश्मा बंसल जी भी आ गए हैं. That's good. Just I ask you people at least to start with, write in the chat box P to mark your presence, that you were present in the webinar. तो मैम एक बात ये थी. दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट के बाद पोहा लेने जाना है ना. पहले बॉडी चेक कर लो एक बार. पोहा ग्रीन डब्बे में पोहा है कि नहीं है. एकदम बात ही नहीं सुनते हैं. हम भी आ जाए पोहा खाने के लिए. हम भी आएंगे. विमल मैम, ये है करिश्मा मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग करिश्मा जी, कैसे हैं? बस एकदम ठीक. आपकी तबीयत कैसी है सर? नाउ आई एम बेस्ट. अभी देखिए लेकिन फिर भी बात ये है ना कि एक आंख में यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज दैट कि मैंने क्या किया मैम कि उस दिन मैं सड़क पे चलते चलते चश्मे को ऐसे किया साफ करने के लिए, भाप लगाया तो बंदर ने समझा खाने की चीज है, वो झपट के ले गया. लगाने के बाद और वो इस जगह पे उसका नाखून लगा. बस वो ये समझो कि आप आधा इंच का फर्क था. बच गया एकदम. और यहाँ पे इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई, दोनों आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगा. नियरली 15 डेज. 15 डेज. आपको ध्यान रखना चाहिए. अरे मैम मैं क्या बंदर का कैसे ध्यान रखूंगा मैं. उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. अभी आ गए निकिता सिंह जी भी आ गई हैं. दैट्स ग्रेट. एंड पैसिफिक स्कूल के ऑफिशियल कोई आ गए हैं. डिवाइस नंबर जी. हाँ ठीक है. थर्ड ब्लॉक में. अरे मैम अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है so that whenever they want to unmute themselves they can do that. yes, yeah. Otherwise background noise जो है that will be just a little bit. हाँ, this is टीना लांबा. टीना जी नमस्कार. अनामिका बनर्जी, she has also come. That's good. माही, आज तो अच्छी होती दिख रही है मैडम. स्ट्रेंथ 40 में से 39 में से 10 आ गए. 25%. Within 2 minutes I will start. Not to waste the time of others also. जिसको टाइम की वैल्यू नहीं पता है वो क्या सीखेगा. True, I think you should begin within 2-3 minutes. Yeah. In the meantime, I request all the people to repeat in my announcement. Mark P in the chat box so that I can see over there, Shwetaji, that you have marked P, which means you were present in the webinar physically in front of the camera, and then only I will be able to issue the certificate. Just keep on marking P in the chat box. And this is also I am writing over here. Man, I'm not writing, I'm just seeing. Most of the time the people come over there. जैसे आपकी वेबसाइट क्लास में चल रहा था कोविड के टाइम में, आपने क्लास चालू करी, बच्चे ने वीडियो ऑफ करके गायब. वो यहाँ पे हो रहा है. श्वेता जैन,
अच्छा, राम शर्मा जी नमस्कार। आपका पूरा नाम सिया राम शर्मा है कि राम शर्मा? सिया राम शर्मा सर। अभी तो यहाँ पे तो राम शर्मा लिखा हुआ आ रहा है। बस शॉर्टकट में चलता हूँ। ओके। विजय लक्ष्मी पी विजय लक्ष्मी दिया। इट्स गुड नाउ टुडे द ये बस बसंती एम, शी इज आल्सो got 18 participants. That's great. And basically I repeat my request, Calvin's iPhone, इनका सर्टिफिकेट मैं इसी नाम से दूंगा, कैरविन्स आईफोन। गीता पाटिल जी भी आ गई है, दैट्स ग्रेट। प्लीज मार्क P in the chat box to show that you were attending the webinar physically. You were present over here. 15 are there now. That's good. Hello, hello. आप आपका तो जवाब ही नहीं है। नाम नाम से राम शर्मा, यहाँ लिखते हैं राम शर्मा, और मेल आईडी में लिखते हैं पंडित, है ना, पंडित लिखते हैं ना। देख लो, विजय लक्ष्मी जी की लिस्ट में 12 people have joined, and so far I can see this is worth now. अभी इसके बाद अगर 3 नहीं आ रहे हैं and the frames are not increasing, which means the people are not going to attend anymore. नहीं आएंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, that's right. Later then we are in this day. गीता पाटिल नमस्कार। चलिए, so participants, 15 participants are there, and I think so this is the right time to start. So they are basically, the thing is, if everybody can see my screen, just let me know. Me Ajay, me Hari. All right, now you can see talking to you people. And basically why was basically the need of this particular webinar? Participants can see your application. Now you can see the full screen. Now over here from I'll start. You see what basically are the tantrums. When the child starts throwing things, shouting, banging, humping, a number of other things like crying, shouting very loud. And these are nothing but these are only the things when the kids or toddlers, or young children, even adolescents, teenagers, and adults also. They also, because when what they are feeling, they are overwhelmed by their strong emotions, and but they don't know how to express their feelings in words. ये तो बच्चों के बारे में, और बड़ों के बारे में भी यही होती है, एडल्ट्स के बारे में। Like you might have faced your grandfather, grandmother, nana, nani, dada, daddy, all of them, because and that in those cases why that happens is because that is due to frustration coming out when the younger generation is not heeding to their words, their ideas, their suggestions, what they want to express, they are not listening to them, so they get frustrated और वहाँ पे टेंशन्स आते हैं। हमारे दादाजी जनरली करते थे पूजा, पूजा पूजा के बाद शाम के वक्त तो खाने के साथ गुड़ चाहिए होता,
अब एक दिन हमने बोल दिया कि रो रही है, उन्होंने फटाक से ताली दे दी, ले जाओ खाना, आज खाना नहीं। एंड लिटरली ही डिनर। उस दिन से हमारी हरकत आ गई, खाने में भूल होना चाहिए, सब्जी में गलती जरूर। And he lived up to the age of 105, 105 years. So when you don't listen to them, they get frustrated. Now, in the tantrums, they can come in all shapes and sizes, even colors also. You see, because when your child is feeling something, but doesn't know how to express, it doesn't have words, it doesn't have grammar, it doesn't have comprehension, sensibility, no sense. They throw toys, पापा से mistake हो गया, चॉकलेट मंगाई थी, पापा चॉकलेट नहीं लेके आए. What he will do? He will throw this. लेकिन इससे बचने के तरीके, इसको क्लासिफाई डाउन करने के तरीके और उनको फर्दर ट्रेनिंग के तरीके होंगे डिस्कसिंग फर्दर. Now the tantrums can be both physical or verbal, or both. और इसके टाइप्स भी होते हैं. Then the child starts screaming, shouting, stiffening limbs, arc back, kicking, falling down on the floor, banging head on the board, throwing the things. This is destructive tantrum. मैं बताऊंगा आपको 5 तरीके की tantrums होती है, 5 types. And by looking at them, some of the people, some of the kids, they just keep quiet, not reacting to any situation, not expressing their feelings. But in those cases, they may go for other tantrums, like holding their breath, moment they hurt themselves and other people. So they come in all shapes and sizes, and after this training, if you repeatedly see this particular recording for once even, you will be able to get the mastery over the subject as to how to identify the tantrum, what type of tantrum this is, what remedy Mr. Sharma told me, and then you apply that, and you will see it will be very much effective. The next one is कि ये happen क्यों होता है? It is basically very common from 1 to 3 years because they don't have social, emotional, and language development. They don't know how to mix up with other people. मम्मी पापा को जानते हैं, मौसी आ गई, दादी आ गई, नाना आ गए, उनको पहचानते हैं, मामा आ गए, उनको पहचानते हैं, उनसे बात कर लेंगे, उनकी गोद में नहीं जाएंगे, उनसे खेलेंगे, हंसेंगे उनके साथ. आप कहो आजा 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 आजा, वो नहीं आएगा because they don't know, they don't have any social development. Emotional development है, that's why they react to you, to your actions. And language है, so certainly tantrum will happen, and that is when they can't express their feelings, express their ideas, their needs, their wants, their requirements. They don't have anything to express or communicate. So the thing is that when they don't have any other such thing to express their ideas, suggestions, wants, wishes, needs, what they do? They try to understand or change what's going on around them through tantrums. करते हैं वो इसीलिए. The next one is the older children can also have, like I told you, adolescents and teenagers, even they also. अभी तो मैंने adults के बारे में भी बात करी. But the major cause, I tell you one thing, the major cause is in the toddlers 1 to 3 years because they don't have words. After too many days of these holidays, अभी जो हमारी दशहरे की गई है, my granddaughter was started trying, getting ready for a daycare at preschool. उसके पापा पूछते क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा. वो अपने पेट पे हाथ रखने लगी. This is the tantrum. आज जाने का मन नहीं है.
But once you go down to that tantrum or expect that particular feeling, what they take is that they take it for granted for further future also. कि I can get my things done through tantrums. इसी तरह से बच्चों को स्ट्रेस भी हो सकता है, hunger, tiredness, overwhelming stimulation. But the thing is that you don't have, as I told you, they don't have words, sentences, grammar, comprehension. So what they do? They move on to tantrums. अभी बताऊंगा इसके आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी. देखिए दो तरीके के होते हैं इमोशंस. स्ट्रॉन्ग इमोशंस, very much, too much worry, fear, shame, angry. छोटे बच्चों में they may be hungry, they may be feeling pain, they might be wishing that they may be given some milk, chocolate, or something like that, but they can't express. So the thing is that it will be more proper that you adopt such a strategy so that they can understand what you are trying to communicate through your facial expressions, through your eyes expressions, through your voice expressions. So you will see the fewer tantrum as a result as the kids move older age. They get older in the age, you will certainly see that they are now getting calm and a little bit composed. Next one is help. How to make tantrums less like. Help your child understand their emotions. जब भी हम बच्चा होता है 2 साल 2.5 साल 3 साल, तो हम क्या कहते हैं? भूख लगी, प्यास लगी, खुश हो जाना है, नंबर ऑफ थिंग्स वी पुट ऑन. और जिसने उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ दिस इज द थिंग आई वांट, सो ही विल एक्सप्रेस हिज यस से ले देगा. So by that way, from birth you can label those feelings like during them happy. बच्चों को सिखाना चाहिए when you are happy बेटा क्या करते हो कि बच्चा बच्चा रोता है तो कैसे करता है, तो ऐसे हाथ ऐसे हाथ. So these are the things that may be taught. The students, the kids must be rather trained to express their feelings. Happy, sad, cross, tired, hungry, comfy, any other. Identify the trigger. कोई भी टेंशन होता है, it is not due to any other reason except the default triggers. They have a number of triggers. There are a number of triggers which we have to identify and at very young age. So you identify the trigger. ये बच्चा कब ऐसे करता है? When he is hungry. जब वो बोल नहीं सकता है, तो at least he will express some way or the other. तो वो टेंशन कब होता है? When he is tired, तो वो ऐसे ऐसे करता रहता है. आपको बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी गर्दन ऐसी होती रहेगी. कभी when he is hungry, trigger क्या है? You might be able to plan for these situations and avoid those things. For example, going to shopping after your child has had a nap or something to eat, when he is not tired and when he is not hungry, then only you should go for. अभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे उसको सोता हुआ छोड़ के कुछ माताएं चली जाती है, बहनें चली जाती है शॉपिंग. बच्चा पीछे से उठ गया, दादा दादी के पास जा नहीं रहा है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. उन दोनों को बच्चों को बुजुर्गों को समझ नहीं आता है how
how should react, what to do. जो लोग बाद में आए मैं उनको बता दूं कि in the chat box you write P to mark your presence in this webinar. Then only you will be issued the certificate. Now encourage them to tune into how your child feels when your child handles a difficult situation without attention. अरे अभी तो आप टावर बना रहे थे and now you are upset. क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं, start again, I am with you, I will help you, चलो हम दोनों मिलके बनाते हैं. So that we try to encourage them towards the positive feeling. कोई बात नहीं, गिर गया, no problem. और जब वो टेंशन खत्म हो जाता है, when the child is calm, then you discuss. Now how do you feel? Do you feel strong? Yes, I can do that, Papa. Mama, I can now do this, do that. हालांकि ये टेंशन्स को रोकने के लिए भी कई और तरीके हैं, बट दे आर जो मेरे नेक्स्ट वेबिनार में I will tell you later on. Talk about the emotion after the tension is over. अब जब किसी बच्चे ने आपके ऊपर कुछ खिलौना फेंक दिया, try to ask him, why did you throw at me? क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, I will rectify it, I will correct it, I will fix it up. लेकिन इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, वो टॉय को मेरे पास ले आते, मैं उसको उसी समय ठीक कर देता. अब आपने टॉय जो फेंका वो टूट भी गया, अब बताओ बच्चा कैसे खेलेगा. Now, so you should try to give them positivity, how to react in difficult situations. Model positive reactions. अब ट्रैफिक में आप फंस गए, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, एंड पॉजिटिव रिएक्शन आपका क्या होगा? टेक डीप ब्रीथ, इट विल हेल्प यू काम, स्टे काम. अब नाउ यू स्टार्ट बैंगिंग ऑन द स्टीयरिंग. ओह यार लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. यू स्टार्ट स्पीकिंग नेगेटिव थिंग्स. देखिए बच्चा जो भी चीज सीखेगा, एटिकेट्स, मैनर्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, सब कुछ आपसे सीखेगा और आपके बोलने से, लेक्चर से नहीं, आपकी मॉडलिंग से. द वे यू रिएक्ट, द वे यू डू. अभी हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर रहे थे, गुड मॉर्निंग की जगह राम राम शुरू कर दो, तो क्या प्रॉब्लम? जब आप राम राम शुरू करेंगे तो वो भी राम राम ही बोलेगा. एकदम से मत एक्सपेक्ट करिए किसी को भी, बच्चे को भी, यंग एज, एडोलसेंट, टीनेजर्स, एडल्ट्स, किसी को भी. अभी देखिए एक वो किंडर जॉय आता है, उसके एडवर्टाइजमेंट में उसकी मम्मा बोलती है, बेटा दिवाली के टाइम ऐसे हाथ जोड़ो, फिर सबके बड़े लोगों के पैर छूओ. उसने एक आंटी के पैर छुए तो आंटी ने ऐसे बोल के दो किंडर जॉय उनके हाथ में कर दी, एंड दे वर हैप्पी. So that way they learn. So this is the value, and if I do this, this will be appreciated. In one way or the other, it will be appreciated. Because the word signs like angry, hungry, ये दोनों similar लगते हैं. But teach your child some key words. बच्चा हैप्पी है तो हैप्पी है तो कैसे करेगा? आप भी करके दिखाओ, बच्चे को भी दिखाओ, उसको भी करने के लिए. Then the child grows 3 years, 4 years, 5 years. स्कूल से घर आता है और स्कूल में ए ग्रेड किसी भी चीज में या पेंटिंग में टेस्ट में, व्हाट ही विल डू? मम्मा देखो, because you have taught him right from being toddler to the young, to the older age, that how to react to different situations. Now there are 5 types of tension seekers.
attention seekers. When they feel that I am neglected or overshadowed by their siblings, यदि आपके घर में दूसरा बच्चा होता है तो बड़े वाला जो है he starts feeling कि now I will be neglected. मम्मा तो उसी के छोटे के साथ ही बात करती रहती है, उसी के साथ खेलती है, मुझसे बात ही नहीं करती. ये चीज अवॉइड करने का every time and be mindful how much time you spend. मुन्ना आओ छोटू से बात करें जरा, देखें क्या कह रहा है. आपको बुला रहा है. मुन्ना मेरे को बुला रहा है. हाँ हाँ आप ही को बुला रहा है, चलो जरा देखो. एंड देन उनके मिसबिहेवियर की जगह रिएक्ट मत करना. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. किड्स की मैंने बात करी थी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग, व्हाट इज द फीलिंग दे आर हैविंग इन देयर माइंड. जनरली हम देखते हैं कि बच्चे को आइसोलेशन में भेज देते हैं, एक कॉर्नर में बिठा दिया, किचन में अपने साथ बिठा दिया. बट द थिंग इज दैट कि यू मे listen to them as long as they feel safe and cared. But there is no reason for such bursts of emotions to occur. Isolation should be avoided under all circumstances. Stop doing anything whatsoever you are doing. गेस्ट भी आए हो, आपके वीआईपी भी आए. जस्ट सर मेरे को जरा 2 मिनट दीजिए, मैं राहुल से बात करके आती हूँ. अब राहुल तो 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में, उसको आज स्पोर्ट्स में ट्रॉफी मिली थी. आपके यहाँ कोई मेहमान बैठे, जैसे ही स्कूल से वो आया, मम्मा देखो मेरे को क्या मिला, और आपने उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसी समय बेटा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, वेरी गुड रख दो इसको टेबल. बच्चा डिसहार्टेंड हो जाता है, वो टेंशन की तरफ भागेगा ही भागेगा, बिकॉज यू आर नॉट लेइंग एनी रूल्स. बैठाओ उसको, वहीं पे बैठाओ, बेटा अंकल से पहले नमस्ते करो, पानी पियो थोड़ा सा जाके, एंड नाउ यू टेल मी किस चीज के लिए मिला आपको. ओह दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट. जो गेस्ट बैठा होगा वो भी आपको इंडिकेट करेगा कि यस, अगर ये एज ए मदर इसे अपने बच्चे को ऐसे अप्रिशिएट करती है तो एटलीस्ट मेरे को भी इसको अप्रिशिएट. गुड राहुल, वेरी गुड, ग्रेट यार, यू आर ए ग्रेट एथलीट. अब आपने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया, तो राहुल इज नाउ वेरी हैप्पी, डबल हैप्पी. स्कूल से शील मिली, घर आके एप्रिसिएशन मिला, मामा से भी मिला, गेस्ट से भी मिला. तो आप बताइए बच्चे टेंशन क्यों करेगा. हाँ लेकिन आपने बोल दिया कि अंदर जाके रख दूं, मैं अभी थोड़ी देर में देखूँ, बस. which means you are ignoring. So they are attention seeking tantrums. एक दूसरी है फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन है, फटीग है, एग्जॉस्टेड है, बच्चा है, and are they are just trying to express what they are feeling. When adults are irritable, we give them benefit of doubt. Then why not give this benefit of doubt to the child? ओ मम्मा आज तो बहुत थक गया बेटा, आज क्या किया. कोई बैठा हो या ना बैठा हो, hardly makes a difference. Pay attention. Just 2 minutes आपकी जिंदगी की 2 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज, आपके दिन के 2 मिनट भी बहुत बड़ी चीज, मगर राहुल की लाइफ चेंजिंग होते हैं वो 2 मिनट. कि मैंने जब बोला तो मम्मा बड़ी हो गई, मैं क्यों थक गया. माँ आज 100 मीटर्स की प्रैक्टिस थी. माँ आज म्यूजिक की क्लास 2 पीरियड चली. माँ आज आर्ट्स की पीरियड 3 पीरियड चले. आज हमारा आर्ट कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन था स्कूल में, और हमको एक ही जगह पे बैठना था. तो सर ने मेरे को बाथरूम भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं जाने दिया, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया. सो दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. वो फ्रस्ट्रेशन घर में ना निकले और उनकी कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में इंकलकेट ना हो जाए. पे जस्ट 2 minutes of your life, of your day to that particular child who is getting fatigue. So frustration कब होती है? When they do not understand a certain rule set by the parents, or they cannot
follow the instructions given to them. So you need to be patient. हम क्या करते हैं कि बेटा देख रहे हो ना कोई आया हुआ है बात कर रही है, आपने एक बार और डांट दिया उसको ऊपर से, गड़बड़ हो गया मामला। जो आपकी सालों की मेहनत होती है कि आपने पॉजिटिविटी उसके अंदर डेवलप करी, तो सारी की सारी पॉजिटिविटी इज गॉन आउट। सो यू मस्ट बी पेशेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड को है मेरा डिसिप्लिन विदाउट येलिंग, बेगिंग और हिटिंग। उसमें ही ये चीजें, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। जो टेंशन्स अगर आपने अपने टेंशन्स को कंट्रोल कर लिया, child will learn. A mother, my mom, tries to express her anger by keeping silent. They will also, और जब आपका वो टेंशन खत्म हो जाता है, वो फेज ऑफ एक्सप्रेशन चला जाता है, then sit with them, try to explain to them, right? Next one is refusal tension. You tell something to do and they don't do. Go easy on them. अगर आपके पास बहुत सारे जवाब हैं उनकी बातों के, खाना नहीं खा रहा, अभी नहीं खा रहा, कोई आपको पूछना नहीं है, बट यू गिव देम सम स्पेस। ओके फाइन, थोड़ी देर में देख लेगा, जब भूख लगी तो खा लेगा। कैसरोल में रोटी रखी, चावल, और नहीं तो मेरे को बता दीजिए, मैं गरम करूँगा। आपको प्यार से रिस्पॉन्स किया, they will try to do this. They will try to adopt to your ways of expression. Allow these things. छोटी छोटी चीजें होती, जब हम ही अलाउ नहीं करेंगे सोसाइटली, रिफ्यूजल टेंशन तो बच्चे के अंदर आएगा ही है। They want to express something, but you don't allow them to. So go easy on them. Destructive टेंशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिएक्शन एकदम से मत करिए, भी मैंने पहले भी बताया है आपको। If you start reacting immediately, what will happen? What will happen is they will get these things from you. How you react to a particular situation, they will react to that, and the same way they will react. चीजें तोड़नी फेंकनी शुरू कर दी, पापा को नमक तेज लग गया सब्जी में तो उन्होंने खाने की प्लेट उठा के फेंक दी, बच्चे ने देखा। अब खूब सिखा लो उसको कि अन्न का अपमान नहीं करती, but they will learn from your doings. What you are doing, they will learn. So remove them from the place of tension and place them in a quiet place. Leave them alone for some time to calm down and reflect on your work. फिर उस चीज को जब वो काम डाउन हो जाए और डाइनिंग टेबल पे आप बैठे, then you start, बेटा आज आप शाम को क्या किया, कि मम्मा मेरे को भूख लग रही थी, आप सुनने ही नहीं दी, तो फिर क्या करता, तो आप मेरे पास आके बोल देते थे, आप अपने रूम में से चिल्ला रहे हो कि मम्मा मेरे को भूख लगी। अगर मेरे को एक बार भी सुनाई नहीं दिया, तो आप नहीं सुनते हो तो मैं भी तो दूसरी बार तीसरी बार बताती, you should also do this thing. ठीक है, अच्छी चीज सीखो। This is bad. Stop crying, stop yelling, and give them attention they need. Fifth one, which is maximum damaging, is self-damage. Kicking or throwing the things. Hold them in your arms and do not let them go unless they calm down or melt down. Do not talk, just only silence. सिर पे हाथ फेरो, कमर पे हाथ फेरो, बोलना कुछ नहीं है, जो उसने रिएक्शन दिया है, नो रिएक्शन ऑन दैट, जस्ट क्वाइट, पैसिफाई,
थोड़ा सा कूल डाउन हो गए, फिर पूछो पानी पिएगा बेटा। अब यहाँ पे हम आते हैं हाउ टू हैंडल टेंशन्स व्हेन दे हैपन। देखिए ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस उम्र का है, बच्चा किस उम्र का है। अब 0 to 2 होता है तो आप उसको समझा नहीं सकते। So you, the best thing that works well is stay close, offer comfort, and reassure that you understand their feelings. Distract, distract, distract. दूध वाला आपका आया नहीं है, घर में दूध आया तो वो आपका चाय इस्तेमाल करिए। बच्चा कहता है दूध चाहिए, बेटा अभी देती हूँ, चॉकलेट खाएगा मेरा राजा। यहाँ से आप जब बोलेंगे करें डिस्ट्रैक्ट, उस जगह से उसको डिस्ट्रैक्ट करें जो उसको इमीडिएटली चाहिए, बट यू कैन नॉट प्रोवाइड। बड़े बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने ताली बजानी शुरू करी, गाना गाना शुरू कर दिया, बच्चे को भूख लग रही है, उसको दूध चाहिए, चाहिए, बट यू आर ट्राइंग टू गाना गाएंगे, यार आई एम फीलिंग हंग्री एंड यू आर सेइंग डांस। किसी एड में आता है, मैंने देखा। बट ओल्डर पर्सन के लिए आइडेंटिफाई 5 स्टेप फॉर calming down. First, identify the emotion. क्यों कर रहा है, उस इमोशन को नाम दीजिए। He's angry, sad, frustrated, disappointed, supported, whatsoever it is. Then you support your child while they calm down. Address the thing when the issue that sparked the tension cools down, pacifies, is gone. Then you address this particular problem. बेटा ये चीज को आप बोल के भी कर सकते हैं। अब बच्चा तो बोलता है कि मैडम ने मेरे को आज सबके सामने डांटा। यू ऑल्सो गेट एंग्री और यू गेट रिस्पॉन्स, अच्छा मैं कल चलती हूँ तेरे मैडम से बात करने। अगर आपने ये रिस्पॉन्स दे दी कि मैं चलती हूँ बात करने के लिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। बिकॉज एवरी टाइम whenever he does wrong and he is going to face some consequence, I'm not saying punish, some consequence he is going to face in front of the class or the teachers, वो आके आपको बोलेगा एंड देन एक्सपेक्ट कि आप उसी तरह से रिएक्ट करें जैसे पहले किया था। आई विल गो एंड टॉक। और अगर आपने नहीं किया तो वो अगेन टेंट्रम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो अकेले में ये रिफ्लेक्ट करेगा, मम्मा तो हमेशा सोचती थी, बोलती थी, आज क्यों नहीं रिएक्ट किया। तो वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी, आपके लिए जो इमोशनल अटैचमेंट है आपका वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। The next one is the tips what I am going to give you. They may help you a lot. But the only thing is that when it passes by, चाहे छोटा बच्चा हो, छोटा मतलब 3 to 5 years और 5 to 10 years, 11 to 18 years. These are the 3 phases of life when the child requires you, your attention. Acknowledge their emotion. Speak slowly in a low voice. धीमी आवाज में, चिल्ला के नहीं बोलना, शाउटिंग नहीं करनी। And when they calm down, touch or hold them if they want you to do. And give them more physical space if they need. But don't try to reason when the tantrum is happening. क्या हुआ? क्या हो गया? बस आपने ऐसे रिएक्ट किया, जाओ ना मैं नहीं बताता, कुछ नहीं हुआ। This reaction will come. And this may irritate you also. आप और vigorously react करेंगे, which will not be helpful, not to you and not to child at all. क्या करें थे?
Be consistent about not giving into demands. मैंने अभी बोला ना कि मैं कल जाके टीचर से बात कर, कभी मत कर जो आपने कहा। ठीक है बेटा, अभी खाना खाओ, रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में बात करें। क्यों किया आपने, क्या किया? He will again say the same thing, मैंने कुछ नहीं किया, मोहित ने मेरे को धक्का दिया था। ओके, तो डोंट टॉक इमीडिएटली, गिव हिम सम स्पेस, 2 घंटे 3 घंटे, लेट हिम काम डाउन। पैराडॉक्सिकल इंस्ट्रक्शंस पता है क्या होती है? पैराडॉक्स मींस बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, you yourself is doing just opposite. This means giving your child permission to scream and shout until they are ready to stop. जब तक वो रो रहा है, छोटा बच्चा है ना, उसको चुप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव मी 30 seconds to have a sip. छोटा बच्चा रो रहा होता है, बड़ा रो रहा होता है, सुबह रहा होता है, सॉरी। So don't try to stop him or her. Let him express that feeling through that tantrum only. That is by screaming, shouting, crying, yelling. जो करना है। Once it is all done and he sees that there is no response from my daddy, what he will do? He will calm down himself. And once he is calmed down, take him to the डाइनिंग टेबल। जब भी आपका डिनर का टाइम होगा, उस समय आप लोग इस इशू को उठाएंगे। देन टॉक इन अ calm behavior. Stay calm. Put your ego on one side. ईगो तो वैसे तो हो ही नहीं चाहिए रिलेशंस में, घर में नहीं होनी चाहिए, बाकी ईगो वर्किंग प्लेस में तो होनी चाहिए। जब भी बोलते थे तेरे अंदर बहुत ईगो है, मैंने कहा वो आदमी क्या है जिसके अंदर ईगो ना, बट ईगो टू सम एक्सटेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कोपिंग करने के लिए सबसे पहली चीज है, यू मस्ट हैव अ क्लियर प्लान ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस पर्टिकुलर टेंशन व्हाटएवर द सिचुएशन इज। राहुल आया ट्रॉफी लेके, उसने आपको दिखाया, आपने इग्नोर कर दिया, तो आपने ही तो उसको बढ़ावा दिया। स्विच ओवर टू डूइंग सम टेंट्रम्स। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ गिरने की आवाज है, आप उस समय अपने गैस को छोड़ के अंदर गए, देखा उसने जानबूझ के वो स्टील का ग्लास फेंक दिया था, बिकॉज ही इज अटेंशन सीकर। अगर आप उसी समय अप्रिशिएट करते, ग्रेट भैया, ग्रेट ग्रेट बच्चा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट यू कैन नॉट कंट्रोल द इमोशंस ऑफ योर चाइल्ड, बट यू कैन ट्रेन हिम टू कंट्रोल हिज इमोशन हिमसेल्फ, एंड दिस वे your child can be safe, guide them to a positive behavior, so the tantrums is less likely to happen in future. Except one thing, that self-regulation is the best regulation. It takes time for the change to happen. It will never happen over time. भगवान दे रहे तो 10 दिन से पूजा कर रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप अपने सिर दर्द के लिए टेबलेट लेते हैं, उसको भी काम कर, ये जो बोलते हैं ना इनो 6 सेकंड में काम करता है, 25 सेकंड में वो नेजल ड्रॉप्स काम कर लेती है, तो 6 सेकंड भी एटलीस्ट इट इज सम टाइम। यू एक्सेप्ट दैट इट इज अ लाइफ लॉन्ग टास्क। और अगर आपने पेशेंस खुद सीख लिया, you will be modeling this particular aspect of your presentations or your character in front of your child. So try self-regulation first yourself and model it in front of your kids, and then you see they will start modeling you.
Beware of thinking. Beware of thinking that your child is doing it on the purpose. Attention seeker भी हो सकता है, and he may be trying to upset you. They don't have tantrums deliberately. Deliberate tantrums तभी हो सकते हैं when it develops into a bad habit. And it develops into a bad habit when it is ignored in the initial stages. छोटा बच्चा है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उसने उठा के एक चीज फेंक दी उधर, एक चीज फेंक दी उधर. So what will happen? This will develop into a tantrum, bad habit. Keep your sense of humor, but don't laugh at the tantrum. And the thing is that if you laugh at that particular tantrum, then certainly you are giving him a sort of reward. That if you do something, Mama will laugh at me, and certainly this is a good sign of doing things. No, it is not. And sometimes it may upset your child even more. Don't laugh. If other people give you dirty looks, what you will do? You will start shouting at them, fighting with them? No. They have either never had children, or sometimes it has been long that they have forgotten what it is like to have a child. There is some disturbance in the net. Now, ways to prevent. It is impossible to create a tantrum-free environment. Make sure it is near impossible to create a tantrum-free environment. कभी free हो ही नहीं सकता. कुछ ना कुछ तो होगा. For example, let them choose between 2 outfits or 2 snacks. Choice दीजिए उनको. मॉल में गए हैं तो बेटा आपको एक टी शर्ट चाहिए या 2 पैटीज या एक पैटी और एक आइसक्रीम. Give them choice and let them decide themselves. You don't decide for him or her. Let them decide. So that they feel in control. Yes, I can take this decision. I'm confident that I want 1 patty, 1 ice cream. That's good. Next one is prepare for transition. एक फेज से दूसरी फेज से तीसरी फेज में जाने के लिए. And these phases may be age group or may be the situations. Like the child is playing, you can't drag him forcibly to the house. चलो पढ़ने का टाइम हो गया, चलो. तो ट्रांजिशन टाइम आपको देना ही पड़ेगा. Check food and sleep. ये दो चीजें. Hungry when he is, there will be tantrum. When he is tired, there will be tantrum. So try to find out what is leading to, what is that trigger that is leading him to put on this tantrum. Next one is use upbeat tone when asking your child to do something, but don't shout. Make it an invitation. If you put your mittens and hat on, you will be able, rather, we will be able to go to your playground. Try to apply these ideas in your life, but don't fight over petty things. Do not battle over trivial and unimportant things like which shoes you will be wearing. अभी हमने देखा ना, इंडियन आइडल है, एक कोई फर्स्ट सिंगर थी मिश्रा. I don't remember the place and full name.
The first day she was wearing torn jeans, and thereafter she started wearing this thing. What do you call it? Sari, salwar suit, decent dress. किसी एक जज ने बाद में बोल भी दी थी, but then your child is not going to be an idol. He is idol for you. So give them a choice. Just give me a second. I will put on the camera and again put on. And see if it comes. Fine. If it doesn't come, still you are hearing me. I think you are able to hear me. Yes, anybody want? Give me in the chat box. Yes. If I am audible to you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. So do not battle over the petty things, trivial things, unimportant things. आज हमने ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाया, बच्चा कहता है कि मेरे को तो ब्रेड जैम खा रहा है, तो गिव देम ब्रेड जैम. Don't push your wishes on your child, because it is when say comes to the upbringing of the child, safety is most important. Not touching the hot stove, not putting the finger in the plugs, car seat buckle, the coat, not playing in the street. So safety is what it matters. So this is the way to prevent tantrums. अकेले के टाइम में जब आप ये बोलेंगे ये बात, तो it will be difficult for him to understand. Praising good behavior. बस थोड़ा सा रह गया है, कुछ नहीं है, 2-4 मिनट का है. Whenever he does something good, always reward them with praise and attention. Yes, very good. अरे राहुल, trophy, great, great. आपने ताली बजा दी. What a big deal you have done. You have boosted his morale by putting him on the right track. By putting him on the right track. Positivity उसके अंदर आ जाएगी. Next is understand your child's needs, what he wants. Being tired, being hungry are two of the biggest tantrum triggers. ये आपके हमारे लिए भी है उतना ही वैलिड जितना बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, टॉडलर्स के लिए. So give them some space. Give them some space. And next is when to worry. Normal toddler behavior is very normal toddler behavior. बच्चा है छोटा सा, दिख रहा है, चल रहा है, let it melt down. It may indicate a more serious underlying issue. उसको उसी समय नहीं रोकना. But if it happens 5 to 10 times a day, then you must visit the physician. Or include aggression, destruction. By the time your child is in kindergarten, tantrum should happen no more than once in a week or so, not more than that. And if you are concerned, refer to the specialist such as child psychologist. कोई बुराई नहीं है जाने में, अगर आपको लगता है कि this is now too much, going beyond my control. Because sometimes excessive tantrums are psychological. Your responses in those difficult situations. उसने कोई बात कहनी है आपको, बतानी है आपको, and you don't
react in the expected way, or you react in the expected way. You have to decide yourself how you have to react to a particular situation. Always let him cool down, calm down. Then you see why this happened. What was the trigger? And how many times it is repeated in a week or day or something. And then स्कूल for the बच्चों के साथ क्या होता है? Whenever this is the time they don't know how to see the wall clock. नहीं they जानते घड़ी देखना. But their biological system, हमारी bio clock जो है उनकी ऐसे सेट हो जाती है कि at that particular time they will start. मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा सिर में दर्द हो रहा है. बस की तरफ जाते जाते मम्मा मेरे को पोटी लगी है. And if this happens more than 4 or 5 times in a week, या consecutively 2-3 days, बस समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो पैटर्न देखिए उस मिसबिहेवियर का, उस टेंशन का. ADHD is one of the major causes, जबकि हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं कि ADHD ये स्टूडेंट्स को यू कैन नॉट डिनाई देम एडमिशन इन अ रेगुलर स्कूल, बट जनरली कर देते. ADHD is activity attention deficit hyperactivity disorder. आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देगा, खाने की जगह ध्यान नहीं देगा, और चम्मच स्पून एंड फोर्क वो टेबल के ऊपर बजाने लगा, खाना छोड़ के ये टेबल को खटखटाने लगा. If it is suspected, then you must seek the doctor's advice immediately. The last one is, yes, this is going to be held on 1st and 2nd December or November. Tomorrow is my next webinar, that is for number such a sequence. It's a long time. Tomorrow is learning styles of students that I have put in the group also. Now I will stop sharing, and if you have got any ideas, problems, suggestions, you just open up your video and we can discuss it for a few minutes. Please open up your videos if you have got any problem, if you are facing any problem, or if you have got any idea. होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है. आप यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. लेकिन ये प्रॉब्लम आप ही के साथ रह जाएगी and you will not be able to get the solution to your problem. If anybody has got anything on your mind, please open up your video and let us discuss. अभी कर लेंगे अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे बाद में वो करेंगे. Priyanka Das ji is also from that PWS. Am I right, ma'am? Yes, sir. बताइए मैम, anything you would like to share with me or with everybody else? अनम्यूट करें तब बोले. जी बताएं. Yes, I would like to say that it was really very informative session, and we generally face these problems at home many times with our own kids and many times in the school. So it was really this session going to help us. I'm sure everybody would be agree with me. I don't know why other people are not speaking or opening up their videos, or probably opening up their this thing. Krishna Bansal ji is there. Yes, sir. Shweta Jain ji bhi is there. It was very informative session, sir. Informative है, that I know. That is why I am earning out of these webinars. That is why I am putting these webinars. और अभी तो आप देखिए ना,
पठानकोट से भी हैं, जमशेदपुर से भी हैं। अभी आप आई डोंट नो PWS कहाँ पर है स्थित, where it is located ma'am, PWS which city? Sir, it's in Greater Noida. Greater Noida West. हाँ तो फिर या थैंक यू जी। Greater Noida West. वेस्ट, गुड। चलिए फिर, मतलब कोई आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आता है कि सर हमने क्लास के अंदर ये टेंशन देखा बच्चों के लिए। श्वेता जी बोलो बोलो, बेझिझक बोलो। आपने आपने माइक्रोफोन को ऑन तो करो अपने, यहाँ आवाज नहीं आ रही मेरे को। है कुछ बोलने के लिए तो बोलो ना, ऑन करो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप अपना नहीं, आप नहीं कर पाएंगे तो मैं कर। मैंने तो कहा था कि देखिए unmute themselves. Anyway, if you have got any problem or any suggestions, any idea, you can write to me directly. You have got my number now. Everybody has got. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Krishna Bansal ji, Rajni Singh ji, thank you very much. Jeez Mary ji, thank you very much. Everybody is writing. I am not understanding your voice. Ram Sharma ji, very low for listening. सबको सुनाई दे रहा है। सियाराम जी, अपने माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। Good. चलिए, so shall I stop with over here so that everybody can now go quietly think about. कभी कभी आपके हस्बैंड भी ये टेंट्रम्स करते हो घर में, वो ऑफिस में बॉस से झाड़ पड़ गई तो घर आके वो सारा का सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर। कोई ऐसा टेंट्रम उन्होंने दिखाया कि आप सक पका गए कि यार हमने तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, एंड स्टिल ही इज शाउटिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ट्रिगर क्या था, क्यों किया? And next time we see, either tomorrow, because there are certain candidates out here who have paid for the fees for tomorrow's session also. That is so great that there are so many learners. और एक बात मैं बताऊं, अगर आपको ऊपर चढ़ना है ना, लेडर, द लेडर ऑफ सक्सेस, पोजीशंस में, डेजिग्नेशंस में भी, ये आपको सारे की सारी चीजें, यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर दीज थिंग्स। पेरेंटिंग के ऊपर मेरे पास 8-10 मॉड्यूल्स हैं, and all of them are like that. चलिए, anyway, so have a nice dinner and nice sleep thereafter. Thank you.